Financial Management Module 175, and this is our first part of our discussion on net present value. Net present value is one of the discounted cash flow methods which is commonly used in capital budgeting. As we discussed earlier when we talked about the basics of these discounted cash flow methods, we said that present value is the amount which is the value of a future amount today, and it is calculated by deducting the interest or the return element which is there in the future amount. तो उस फ्यूचर कैश इनफ्लो में से जब हम उस डिस्काउंटेड रेट के हिसाब से उस रिटर्न या इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, then what we get is the present value of that future cash inflow. Now, net present value means the difference between cash inflows and cash outflow. अगर हम ये टर्म यूज करें नेट कैश फ्लो, तो इसका मतलब होगा कि नेट इनफ्लो ज़्यादा है या आउटफ्लो ज़्यादा है. सो अगर नेट कैश इनफ्लो होगी तो इसका मतलब है कि इनफ्लो आउटफ्लो से ज़्यादा है, और अगर नेट कैश आउटफ्लो होगी तो इसका मतलब है कि इनफ्लो आउटफ्लो से कम है. बट व्हेन वी कॉल this method as the net present value method, so in this we are not only netting off the cash flows, but we are netting off the present values of the cash flows. The process is the same. That is, we deduct the outflow out of the inflows, but the present values of the inflows and outflows. So you can see on the screen, this is not only the definition of net present value, but this is also the method to calculate net present value. Yani, the difference between the sum of present values of cash inflows and cash outflows is what is called net present value. And this is the procedure of calculating net present value or NPV. That is, we calculate the present values of inflows, we sum them up, add them together. Whatever answer we get, we deduct out of that the amount of outflow, and we get net present value. This net present value can be positive, can be negative, or it can be zero. How can we make a decision on the basis of the results of NPV? We'll see it at the end of this module. Now, you can see on the screen that the table of net present value is given, where we have got the years from the start of the year 1, that is point 0, to the end of year 5, and then we have got the cash flows. Initial is an outflow of 100,000, and then we have got inflows from 20 to 60,000. In the third column, we have calculated the present values at the rate of 10%. The question is कि ये 10% रेट हम क्यों यूज कर रहे हैं, 20% क्यों नहीं, 5% क्यों नहीं? So this in technical terms is called the discounting rate, the rate used to calculate the present value. But practically speaking, this is our required rate of return. यानी जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट से हम कितने परसेंट प्रॉफिट या रिटर्न अर्न करना चाहते हैं, एंड दैट इज द रेट दैट वी यूज फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंटिंग द कैश फ्लोज. सो इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, डिस्काउंटिंग रेट यूज करना है, लेकिन ये डिस्काउंटिंग रेट असल में हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा, वो रेट जो हम प्रोजेक्ट से अर्न करना चाहते हैं, एंड इट इज नोन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. अगर हम इस रेट को किसी और तरीके से देखना चाहें, यानी डिस्काउंटिंग रेट कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स है, यानी वो कम से कम रेट जो हम कहीं और से अर्न कर सकते हैं, वो इस प्रोजेक्ट से हमें ज़रूर मिलना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिफाइन की जाती है एज the percentage, the return, the profit that we forego by not investing in a project. यानी कोई और प्रोजेक्ट है जिससे हमें 20% प्रॉफिट मिल रहा है
और अगर हम उसे छोड़ दें, फोरगो कर दें, तो हमें कम से कम 20% इस प्रोजेक्ट से मिलना चाहिए ताकि हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कवर हो. सो द रिक्वायर्ड रेट मे बी द मार्केट रेट, a predetermined rate, or the opportunity cost. But once we apply that discounting rate and we come up with the present values, तो हम उन तमाम present values को sum up कर लेते हैं. That is, starting from year 1, 18,000, 24, 30, 34, 37,000, और हमारे पास एक total amount sum of present values of inflows आ जाती है, which is 144,434. ये क्या है? ये sum of present values of inflows है. इस अमाउंट में से जब हम अपनी इनिशियल आउटफ्लो को माइनस करते हैं, which is 100,000, तो हमारे पास जो अमाउंट बच जाती है, which in this case is 44,434, is called the net present value. And you can see that in this case it is a positive value. ये हो सकता था कि हमारी इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू का सम 144,000 के बजाय कम होता और लेट से 95,000 होता. उस केस में जब हम 95,000 में से 100,000 को डिडक्ट करते तो हमारे पास एक नेगेटिव आंसर आ जाता, यानी -5,000 नेट प्रेजेंट वैल्यू. और एक, जैसे मैंने पहले कहा, रेयर सिचुएशन यूं भी हो सकती है कि ये जो हमारी प्रेजेंट वैल्यूज हैं इनफ्लोज की, इसका सम एग्जैक्टली 100,000 आ जाए. तो जब हम 100,000 में से 100,000 को माइनस करें तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आ जाए. एंड दीज थ्री, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वैल्यूज आर देन यूज्ड टू मेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, यानी प्रोजेक्ट को कब एक्सेप्ट करना है. व्हेन द प्रोजेक्ट इज ऑन, it is in two conditions or two possibilities. That is, if the net present value is positive, we accept the project. Or if the net present value is 0, we still accept the project, and we only reject the project if the net present value is negative. हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे एक बहुत अहम नुक्ते के ऊपर, एक बारीक नुक्ते के ऊपर. यानी अमूमन स्टूडेंट जिस बात से कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक में कि अगर पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ही किया जाना चाहिए, और अगर नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है तो रिजेक्ट किया जाना चाहिए. लेकिन ज़ीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू पर प्रोजेक्ट को क्यों एक्सेप्ट किया जाता है? द आंसर इज वेरी सिंपल, दैट ज़ीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू मीन्स दैट द डिस्काउंटिंग रेट or the required rate that we have used to calculate the net present value is actually the rate of the return of the project. यानी प्रोजेक्ट से जो रेट हम अर्न करना चाहते थे वही रेट प्रोजेक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है. इस केस के अंदर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि हमने एग्जैक्टली वही रेट डिस्काउंटिंग के लिए यूज किया. तो अगर कोई प्रोजेक्ट हमें एग्जैक्टली वही रेट दे रहा है जो कि हम अर्न करना चाहते हैं, so definitely we'll accept that project. So the acceptance is a positive or 0 net present value, and rejection is only if the net present value is negative. And the last thing that you need to remember, that it is one method which gives us results in absolute terms. यानी ये हमें रुपी या डॉलर वैल्यू के अंदर रिजल्ट्स देता है. इस बात को हम अगले मॉड्यूल्स के अंदर मज़ीद एक्सप्लोर भी करेंगे.